गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार पळयात खबरो विस्तारान। योगी आदित्यनाथाक उत्तर प्रदेशाची धुरा सांबाळपाक परत एकदा संद मेळ्ळा। काल योगी आदित्यनाथान मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली। दाबाच्यात जाल्ल्या सोपूतविधी सुवाळ्यात 2 उपमुख्यमंत्री 16 कॅबिनेट मंत्री धरून 52 मंत्री वांगड्यांनी सोपूत घेतलो। ह्या शपथविधीक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सयत हेर भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी हाजीर आशिल्ले। केशव मौर्य आनी ब्रिजेश पाठकान उपमुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो। त्या उपरांत 50 आमदारांनी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो। 52 वांगडी मंत्रिमंडळांत 16 कॅबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभारी आनी 20 राज्यमंत्र्यांचो समावेश आसा। गोरखपूर हांगा इकान स्टेडियमांत सोपूतविधी सुवाळो जालो। राज्यपाल आनंदीबेन पटेलान योगी सयत हेर आमदारांक सोपूत दिलो। हेर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यां सयत गोयचे भावी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतय सोपूतविधी सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले। लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं केशव शरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मयंकेश्वर शरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से
संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जब मैं राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सशक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। नवो मोटर वाहन कायदो 1 एप्रिलासान लागू जातलो। नव्या कायद्या प्रमाण जायत्या प्रकरणांतलो दंड 10 पटीन वाडयला। गोंयांत बरेच जाण गाडी चलयतना अंधाधुंदी करतना पळोवपाक मेळटात आनी गुन्यांवकार जायत्या जाणांक गाडी मारून लंपास जातात। आता बेजबाबदारपणान आनी अंधाधुंदीत ओव्हर स्पीडिंग आनी सीट बेल्ट घालिनासतना गाडी चलयतल्यांक गुन्यांवकारांक 1000 रुपयाचो दंड फारीक करचो पडटलो। 1 एप्रिल सावन हेल्मेटां घालिनासतना गाडी चलयतल्यांक आनी ट्रिपल सीट चलयतल्यांक 1000 रुपयांचो दंड पडटलो आनी ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबीत जातले। सरकारान 1 एप्रिल 2022 सावन नवो मोटार वाहन कायद्याच्यो तरतुदी लागू करपाची घोशणा करपी सार्वजनीक सूचना जारी केल्या। सार्वजनीक सूचनेत मोटार वाहन कायदो 1998 अंतर्गत दंडा संबंधीत तरतुदी जारी केल्या। फाटल्या वर्सा 27 जूनाक ह्या कायद्यांत सुदारणा हाडून अधिसूचित केल्ले। नवो दंड फाटल्या दंडाच्या कोंतांत 10 पटीन चड आसतलो। कायदेशीर ड्रायव्हिंग लायसन्सा शिवाय गाडी चलोवप आनी परमिटा शिवाय गाडी वापरल्यार 10,000 रुपयांचो दंड भरचो पडटलो। नोंदणी नासतना गाडी चलोवप आनी इन्शुरन्स नासल्यार 2,000 रुपया फारीक करचे पडटले। ते भायर मोटरसायकलीचेर ट्रिपल सीट बसल्यार आनी हेल्मेटा शिवाय गाडी चलयल्यार 1000 रुपयांचो दंड भरचो पडटलो आनी त्या भायर ड्रायव्हिंग लायसन्स 3 म्हयन्यां खातीर निलंबीत जातले। कायदेशीर ड्रायव्हिंग लायसन्सा शिवाय आनी परमिटा शिवाय गाडी चलयतल्यांक 10,000 रुपयांचो तालांव। नोंदणी आनी इन्शुरन्स नासतना गाडी चलयतल्यांक 2,000 रुपयांचो तालांव। मोटरसायकलीचेर ट्रिपल सीट बसतल्यांक आनी हेल्मेट घालिनासतना गाडी चलयतल्यांक 1000 रुपयाचो दंड आनी ड्रायव्हिंग लायसन्स 3 म्हयन्यां खातीर निलंबीत। बेजबाबदारपणान आनी अंधाधुंदीत ओव्हर स्पीडिंग आनी सीट बेल्ट घालिनासतना गाडी चलयतल्यांक 1000 रुपयांचो दंड। गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट। जगभरात कच्च्या मालाची किंमत वाढिल्ल्यान ह्या सप्तकात चवथे फावट इंधनाच्या दरात प्रत्येकी 80 पैसे लिटरान वाड केल्या। जाल्यार गोंयांत पेट्रोलाचे दर 19.75 रुपया आनी डिझल 90.64 रुपयाचेर पावला। हो आंकडो आतां फक्त 100 पार करपाचो उरला। रुपया डॉलराचो एक्सचेंज रेट, कच्च्या तेलाचो दर, जागतीक घडामोडी, इंधनाचे वाडपी मागणी आनी हेर घटक इंधनाचे दर निश्चित करतात। प्रति बॅरल $82 वयल्यान प्रति बॅरल $117 पावनय इंधन कंपन्यांनी फाटले 137 दीस जाले इंधनाच्या दरात सुदारणा करूंक नाशिल्ल्यान ताचो पेच आतां गिरायकांचेर आयला। रेटिंग एजन्सी मूडीच्या म्हणण्या प्रमाण वेंचणूक काळात इंधनाचे दर तशाक तशे दवरल्या कारणाक लागून भारतातल्या शासकीय इंधन विक्रेत्यांनी $2.25 बिलियन इतलो महसूल बुडयला। इंधनाची मागणी पुराय करपा खातीर भारत भायल्या देशांतल्यान इंधन आयात करता। देखून जगात चलपी वातावरणाक अनुसरण इंधनाचे दर निश्चित जातात। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। घेवया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। भारतात नव्या कोविड दुयेंतीचो आंकडो 1660 जाला। फाटल्या 24 वरांत 4100 मरणाची नोंद जाल्या। गोंयांत 24 वरांत कोरोनाचे एकूच नवे दुयेंत ना, जाल्यार कोरोनाक लागून कोणाकच मरण येयल्ल्याची बातमी लेगीत ना। भारतात फाटल्या 24 वरांत 1660 नव्या कोविड दुयेंतींची नोंद जाल्या। कोरोनाक लागून 4100 जाणांक मरण येयलां। जातूंतले महाराष्ट्रांतले 4005 लोक आसात, जाल्यार केरळांत 79 मरणांची नोंद जाल्या। भारतात 98.75% दुयेंती बरे जाल्यात, जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.25% आनी सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.29% जाला। जाल्यार 12 ते 14 वर्साच्या भुरग्यांक पयलींच्यानच 1 कोटीपेक्षा चड डोस दिल्ले आसतना देशांत आतां मेरेन 180 कोटीच्याकूय चड लसींचे डोस दिल्यात, जे ह्या म्हयन्याच्या सुरवातीक सावन सुरू जाल्यात। जायते पूर्व आनी आग्नेय आशियाई आनी युरोपीय देशांत ओमिक्रॉनाचो BA.2 उपवंशान कोविडाच्या वाडीक चालन दिल्ल्याच्या अहवालांत कर्नाटकाचे भलायकी मंत्री सुधाकरान विधान परिशदेंत सांगिल्लें की ऑगस्टांत भारतांत साथीच्या रोगाचे चवथे ल्हार येवपाची शक्यताय आसा। फाटल्या 24 वरांत 1660 नवे दुयेंती, 24 वरांत 4100 मरणांची नोंद। भारतांत 98.75% दुयेंती दुयेंसमुक्त। गोंयांतय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो कांय दिसां सावन सिंगल डिजिटाचेर पावला।
कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात आशिल्ल्याचें दिसून येता जाल्यार फाटल्या कांय दिसांक कोणाकच मरण येवंक ना ही एक सुखदिणी गजाल. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. CSEPI ही संस्था लैंगीक शास्त्राचे राष्ट्रीय परिशद गोंयांत घडोवन हाडटली. ही परिशद बोगमाळो बीच रिसॉर्ट हांगा फाल्यां आनी परवा अशी 2 दीस चलतली. संस्थेचो वांगडी दोतोर शिरीष मालडेन सांगले. परिशदेच्या आदल्या दिसा ह्या विशयाचेर कार्यशाळा जातली. दोतोर प्रकाश कोठारी हाचे मार्गदर्शन करतले. गोंयभरचे तशेंच गोंया भायल्या दोतोरांनी ह्या कार्यशाळेत जावपी वैज्ञानीक सत्रांत वांटो घेवचो. अणभवी तशेंच नव्या दोतोरांक हे खूब फायदेशीर ठरतले अशें मालडेन सांगले. For the National Conclave of Sexology, which is being held in Goa at Bogmalo Beach Resort from tomorrow and day after tomorrow, the event will be there. And as a part of the event, we will be having a pre-conclave workshop today at afternoon hours, where the workshop leader, Dr. Prakash Kothari, will take the subject of management of male sexual dysfunctions. So I want to invite all the medical fraternity of Goa and around Goa to take advantage of this scientific meet, where we will be conducting the scientific sessions. Say about 51 years ago, you'll be surprised to know that we knew nothing, because any case which we see, whether the problem is psychological or organic, whether it is situational or constitutional, you will find that there is tremendous anxiety over a sexual situation, which is usually brought about by the negative feelings, which gets into conflict with the experience of failure. The failure recurs, anxiety increases, and a cycle is formed. But unlike rest, this particular anxiety is born out of myths and misconceptions about sex and sexuality. Because sex education is not given in schools and colleges, and along with that, even the subjects of psychopathology and psychophysiology of sex and sex dysfunctions are not taught at all to the medical students. So a majority of the doctors which you see, when they are confronted with a sexual problem, what do they do? What do they do? Either they draw a dismal blank or prescribe one of the ever-increasing plethora of the drugs or dopes, or the so-called sex tonic, which if at all they are effective only by the well-known mechanism of suggestion or faith cure. And if I were to complete this in one sentence, Nina, I would just say that it's exploitation of the desperate by the ignorant. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. केंद्रीय पर्यटन, वस्त्रोद्योग, कौशल विकास मंत्रालय हांचे जोड पावलान गोंयांत द लक्झरी सिम्पोजियम लीग ह्या 2 दिसांच्या कार्यावळीचे उक्तावण आयज जातले. शेनवारा गोंयांत द लक्झरी सिम्पोजियम लीगचें उक्तावण जातलें. पोन्ने गोंय हांगा जावपी उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय सांस्कृतीक मंत्री मिनाक्षी लेखी हजर आसतली. जाल्यार रितू बेरीन पत्रकार परिशदेच्या वेळार द लक्झरी लीगा बद्दल उलोवप केलें. ह्या लीगांत खास कपडे, हातान केल्ले वस्तू तशेंच वेगवेगळे जागतीक स्तरावयले ब्रँड लेगीत वांटो घेतले. It's at a luxury conference where there were a lot of important brands, Louis Vuitton, Van Cleef & Arpels, everybody was there, and everyone was talking about how important luxury is from different parts of the world. And I kept waiting for India's turn. I really do believe that India is true luxury, Whatever we have, I'm going to start off with my belief that we are an inspiration to the world, whether it's in the field of science, whether it's in the field of art, whether it's in the field of fashion. There have been so many designers that have done collections inspired by India. Correct. So India is an inspiration, but when this conference was going on, there was no mention of India. There was no talk about the beautiful Patiala jewels, the luxurious life of our Maharajas and Maharanis, our palaces. India is a really old civilization, and we were the richest civilization in the world at one time. I mean, the very fact that the Kohinoor comes from India, we've got to claim our heritage,
So when throughout the conference there was no mention of India, I got a bit rebellious and I said, how can they not understand that India is true luxury and India needs to be looked at with more respect? So I came back to India and I decided that I'm going to start a club of people where I'm going to promote the luxury from India. And I realized that if we need to go anywhere, we've got to have the support of the government. Because the government needs to understand that luxury is not a bad word. India is true luxury in my eyes. India gives us the license to use luxury as an art form. So I will not change my name, I want you to accept it. So as time came up and as I showed my work to the higher offices in the government, we are very proud that we have the support not just of the Prime Minister's office. We have, for Goa, we have 3 ministries supporting us. We have the Tourism Ministry of India, we have the Textile Ministry of India, and we have the Skill Development Ministry of India. And to add to it, on 26th, the Minister of Culture is coming to be with us and support us and initiate talks with different government bodies in Goa. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान शामचारी. हवामान खात्यान गोंयांत जारी केल्लो येल्लो अलर्ट आतां कमी केला, पूण आयज कांय वाठारांनी हलकोसो पावस शिरशिरतलो. 27, 28, 29 आनी 30 तारखेक हवामान सुकें आसतलें. आयज कांय वाठारांनी धुकें आनी दव पडपाचो अदमास आसा. प्रवास करप्यांक काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार आसतलें. आतां मेरेन नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची खाशेली अशी शिटकावणी ना. आनी आजचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोविडाचे फाट भयर घेवया जतनाय. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.